स्टार्ट द रिकॉर्ड। और हम कर रहे थे रॉड्रिक्स फॉर्मूला। तो रॉड्रिक्स फॉर्मूला से इज दिस, जरा एक मिनट। हेलो, हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ क्लास। مش دير ميت assignment. हाँ चलो ठीक। हम maintenance के। चलो ठीक। ओके। हाँ हाँ, तुम मुझे सुन रहे हो? हेलो 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 हेलो। अरे यस सर। मुझे सुन रहे हो? जरा कैमरा ऑन करो। कौन? तो वो जो असाइनमेंट्स जो मैं तुम्हें देता हूँ ना, वो साथ साथ जो मैं होम असाइनमेंट्स देता हूँ, ठीक है ना? हेलो, मैंने होम यस असाइनमेंट्स दिए थे ना, यस सर। मैं साथ साथ देता रहता हूँ ना। और कुछ के बाद ये होम असाइनमेंट है, ये होम असाइनमेंट है, ठीक है ना? तो उसको भी तुम साथ साथ करते रहना, ठीक है ना? वो तुम्हें सबमिट भी जल्दी करने हो, और उससे थोड़ा रिवीजन भी होएगा, क्योंकि वो कोई एक्सरसाइज होगी, तुम फिर से पढ़ोगे, फिर उसको देखोगे, तो उससे तुम्हारा वो साथ में पढ़ाई का रिवीजन भी होता रहेगा, और असाइनमेंट्स तुम्हें सबमिट भी करने हैं, उसके मार्क्स भी हैं। तो इसलिए तुम दोनों साथ साथ करते रहो, ठीक है? ठीक ठीक है है, सर। वो साथ साथ करते ठीक रहना, रिवीजन भी होता रहेगा, और वो रेडी भी होते रहेंगे जब देने होंगे। ठीक है सर। ओके। ओके, तो हम कर रहे थे रॉड्रिक्स फॉर्मूला व्हिच सेज दैट a curve is a line of curvature if and only if, क्या किया था हमने, k dr plus dn is equal to 0, because this वेक्टर इक्वेशन so 0 है। तो हमने कहा था लाइन ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करती है। जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक पहुंचे थे, lambda is equal to m minus kf। हाँ, यहाँ पे k is the normal curvature। एंड ऑफ कोर्स दूसरा है kf minus m, lambda was du by dv, n minus kg, where of course lambda is equal to du by dv, right? Oh, okay, so that would give us, so which gives, यानी उससे हमें मिलेगा, that is lambda को सब्स्टिट्यूट करेंगे, so you will get basically l minus ke times du plus m minus kf times dv is equal to 0, and m minus kf, मैंने इसको वहां माइनस को भी एडजस्ट कर दिया, times du plus n minus kg times dv is equal to 0, ठीक है? सो दीज आर द टू इक्वेशंस जो वो सेटिस्फाई करेगा अगर वो लाइन ऑफ कर्वेचर है, राइट? अब हमें दिखाना है वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो एक्चुअली के डी आर प्लस डी एन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? के बीइंग यहाँ पे वन ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर्स, में दो है, इनमें से एक,
Of course, this is we get two values from this, solving them simultaneously, or for solving eliminating lambda. So we will get two values. So k being one of the principal curvatures, right? Okay, and of course E, G, F, and L, M, N, the fundamental magnitudes. Okay, now we know that इसको substitute करना पड़ेगा कि L is equal to minus N sub U dotted with RU, M is equal to minus N sub V dot with RU, or it's also equal to minus N sub U dotted with RV, and N is equal to N sub V dotted with RV, of course minus, and E is equal to RU dot RU. F is equal to RU dot RV, and okay, uh, and G is equal to RV dot RV. Let's call this pair of equations 1. So substituting these values in 1, we get what? We get what? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेट मी, अब चूंकि मैं पेज क्या करूं, इसको ऐसे ही रखूं, तो इसमें क्या है, यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करना है, इधर ये सब्स्टिट्यूट करना है, अकॉर्डिंगली ये सब्स्टिट्यूट करके मैं सीधे लिखता हूँ यहाँ पे, it would be n dot ru plus k times ru dot ru. मैंने वो माइनस जो वहां था उसको इसके माइनस के साथ एडजस्ट कर लिया, टाइम्स du प्लस n sub v dot ru plus k ru dot rv whole multiplied by dv is equal to 0, and n, ओ यहाँ पे कुछ है, जैसे एन ई था यहाँ पे, हाँ एन यू डॉट आर वी, इसी तरह से एन यू डॉट आर वी प्लस के टाइम्स आर यू डॉट आर वी, क्योंकि ये है अपना एफ यहाँ पे, सो डी यू प्लस देन आई हैव एन ई, यहाँ पे है एन, सो इट विल बी एन वी डॉट आर वी माइनस प्लस को एडजस्ट हो गया, प्लस के आर वी डॉट आर वी times dv is equal to 0. So this is what I get. तो अब मैं अगर आर यू वाली टर्म्स को अलग करूं, आर यू वाली टर्म यहाँ पे है, आर यू वाली टर्म यहाँ पे है, और आर वी वाली टर्म्स को अलग करूं, सो आई गेट, ओके, तो लेट मी राइट इट डाउन, आई गेट एन यू डी यू प्लस एन वी डी वी dotted with r sub u plus k times आर यू टी यू प्लस यहाँ है आर प्लस आर आर वी, यस आर बी डी वी, ये वाली टर्म टाइम्स डी वी इक्वल टू टाइम्स, सॉरी डॉटेड विद आर यू, मैंने आर यू को कॉमन निकाला, तो तुम देखोगे इसके बराबर होगा पहली वाली इक्वेशन, राइट, सो नहीं यहाँ आर यू होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि यहाँ आर यू है, यहाँ भी आर यू है, यहाँ भी आर यू थ्रू आउट कॉमन है, यहाँ आर वी थ्रू आउट कॉमन है, तो आर वी कॉमन आएगा, एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा सेम थिंग, एन यू डी यू प्लस एन वी डी वी डॉटेड विद आर वी, लेकिन आर वी थ्रू आउट कॉमन है, प्लस के टाइम्स
ru du, same thing, plus rv dv dotted with, क्योंकि rv throughout common है तो ये 0 हो जाएगा, which would of course give me, this is nothing but dn, so it is dn dot ru plus k times, this is just dr, यहाँ थोड़ा हाँ देखो, dr this thing dotted with r sub u is equal to 0, and then साथ में dn dot rv plus k times dr dot rv is equal to 0. Dot product is distributes over vector addition. So it would be dn plus k times dr dot product with r sub u is equal to 0, and dn plus k dr dotted with rv is equal to 0. So let's call this, मुझे पता नहीं last वाला नाम क्या दिया था मैंने 1, so let's call this 2. ठीक है? Now, but this vector is tangential to the surface because dn जो है, it lies inside the tangent plane. क्योंकि tangent plane का normal है n, and it is generated by ru and rv. So any change dr lies here. Now dr lies inside this, but dn also lies in this vector, in this tangent plane. और उनका linear combination भी उसी के अंदर lie करेगा, because dn is perpendicular to n. So but इसका मतलब अगर ये दोनों को परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, अभी अगर मेरे पास प्लेन है और यहाँ पे कोई नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, you cannot have another point in the plane which is perpendicular to this as well as perpendicular to this unless they are collinear. एक ही सिचुएशन थी अगर वो collinear होते इस तरह से. Now you can have a third vector which is perpendicular to both in a plane if they are collinear, but they cannot be collinear because अगर collinear हुए तो ये surface regular नहीं रहेगी. Now since Tn plus kdr is tangential to the surface, therefore we must have, it must be a zero vector क्योंकि it cannot be perpendicular to the both if it is non-zero. So therefore we must have Tn plus kdr must be a zero vector. अच्छा हमने लिखा था शायद kdr plus dn, but doesn't matter, एक ही बात है, a vector addition is commutative. तो अगर ये लाइन ऑफ कर्वेचर है तो इसका नॉर्मल कर्वेचर जो है, which would be in this case line of curvature का मतलब which would be the principal curvature. The principal curvature would always satisfy Rodrigues equation. Now conversely मान लो normal curvature इसको satisfy करता है, तो क्या वो फिर highest और least होगा, यानी क्या वो principal curvature होगा? So वो हमें करना है, conversely suppose that kdr plus dn is equal to 0. Along a curve for any function k. मतलब अब हमें पता नहीं है नॉर्मल कर्वेचर है, फिर मान लो के डी आर प्लस टी एन इस तरह से है, कोई फंक्शन k है जिसके लिए ट्रू है, then reversing the above steps, then reversing the above steps we will get what? We will get L minus ke जो हमें था du plus m minus kf times dv is equal to 0, and m minus kf times du plus n minus k times dv is equal to 0. Thus, the curve will be a line of curvature.
if ये line of curvature होती if k is the normal curvature. Of the surface at that point. ये मतलब satisfy, these are precisely the provided k is normal curvature. हम दिखाएंगे k is indeed the normal curvature if this is true, if kdr plus dn is equal to 0. But from kdr plus dn equal to 0 vector, it implies that k times dr का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ru du plus rv dv is equal to minus n sub u du plus n sub v dv, taking dot product on both sides, taking dot product of both sides with the vector, with dr basically, that is r sub u du plus r sub v dv, we get, of course जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, it would be k times ru du plus rv dv dotted with itself, ru du plus rv dv, needless to say basically ये खुद ही बता रहा है मैं क्या हूँ. So minus n sub u du plus n sub v dv dotted with r sub u du plus r sub v dv. Oh, needless to say, this is nothing but k ru dot ru is e. This is e du square plus twice f du dv plus n dv square. Oh, sorry, g dv square. और यहाँ पे मुझे मिलेगा nothing but l du square minus, of course, नहीं minus से वो absorb हो जाएगा, twice m du dv plus n dv square. That is, anything that satisfies Rodrigues equation has to be, then k has to be l du square plus twice m, which is our normal curvature, divided by e du square plus twice f du dv plus g dv square, which is the formula for the normal curvature. यानी Rodrigues equation में जो k है वो normal curvature के सिवा और कुछ हो नहीं सकता, and therefore what? Therefore it must be a line of curvature, because we can just do the steps जो हमने पहले किया फिर उसको reverse किया, and we can get that curve would be a line of curvature if and only if it satisfies the Rodrigues formula, which is the formula for the normal curvature. Hence, the curve is indeed a line of curvature on the surface. Okay. Now, इसके बाद है हमें जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है. लेकिन तुम इसको पढ़ा करो, इसको रिवाइज किया करो बाद में.